नहीं होगा. Grammar section will be, your grammar portion will be there, okay, and all the question will be of multiple choice. There will be 50 question around. Your UT will be of 50 marks, and the questions from your textbook also will come in form of a multiple choice. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे आपके सारे ही, चाहे वो टेक्स्ट बुक से हो या ग्रामर सेक्शन से हो या रीडिंग सेक्शन से हो. प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दी चैप्टर्स थोरोली, एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे. आफ्टर दैट टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर. एक एक चैप्टर को वंस अगेन वी विल ट्राई टू प्रिपेयर. आपके एग्जाम इन द नेक्स्ट वीक इट विल स्टार्ट. ओके, so normally I'll try to give 3 periods, one for the one book both the chapter, another for the another book both the chapter, plus poetry part, poetry section, and one day we will devote totally for the grammar section. एक दिन आपके grammar section के लिए मैं बताऊंगा. Okay, that we will discuss all about the grammar section. So try to you also try to read properly, and all the lessons you must go through seriously, because the multiple choice question, it can be taken, so many questions can be framed within one line. एक लाइन में से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, and it can be in different way. So if you have to answer the if you have to perform better, it means you have to read very seriously. आपको बहुत अच्छे seriously उसको पढ़ना है. You have to understand, and you try to read in English, in Hindi as well as, okay, हिंदी में भी, मतलब lesson must be understood by you completely, पूरी तरह से वो मतलब समझ में आ जाना चाहिए. Okay, and then we were there actually after the Amenhotep IV. Amenhotep IV, when he became the king, actually he did 2 things wrong. 2 चीजें गलत की थी उसने. First of all, he stopped worshipping of Amun, their chief god, जो उनका मुख्य देवता था, उसको उन्हें वर्शिप करना बंद कर दिया था. And he started worshipping Aten. Aten उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया. Then he shifted the religious capital from Thebes to Akhetaten. Akhetaten. Yeah, this sort of name will be there. You have to remember all this. Okay. And he was called Beki for this reason. There was a totally revolt in the people. They were totally dissatisfied with his action. इसके action से काफी मतलब dissatisfied हो गए. Okay, now after the Akhenaten's death, Akhenaten की death के बाद, Akhenaten, the mysterious ruler named Samarkand appeared briefly. Briefly means for a short period. The Samarkand, he appeared briefly and exited with hardly a trace. And exited, came and gone, without any trace, without any example, without any sort of history creations and all. Nothing was there. Very peacefully, just for a short time he came and go, chala gaya tha. And after then a very strong, very young Tutankhaten took the throne. This is young Tutankhaten. Actually, this is the name. Tutankhaten, ये जो Tut, discovering Tut saga continue. Tut is a short name. ये short name है. और Khaten, Aten इसके अंदर लगाया हुआ है. Aten, ये Aten किसके? If you see the book, अगर आप book में देखें, Tutankhaten, Aten ये इसलिए लगाया है because they started worshipping Aten, the sun disk. जो उनकी सन डिस्क थी, सन गॉड था, जो भगवान जो देवता था उनका, उसको पूजा वो अपने नाम के पीछे लगा दिया. ओके, इट वाज जस्ट लाइक ए सरनेम. Tutankhaten took the throne. ये was the youngest ruler and the last heir of that powerful family. जो इस powerful family का आखिरी उत्तराधिकारी था. ये बिल्कुल in the young age he took the throne. राजगद्दी पर छोटी सी उम्र में बैठ गया king. And Tut, as he is widely known today, जिसको आज हम तट के नाम से जानते हैं, मीन्स द चैप्टर टाइटल ऑफ द चैप्टर, जो टाइटल है, एंड दैट इज गिवन बाय दैट नेम एंड वाइडली नोन. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टटनखाम्यून. ये ध्यान रखना ये नाम का. प्लीज ट्राई टू वंस अगेन, इफ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क. अम्यून इनका चीफ गॉड था. अर्लियर ही वाज द चीफ गॉड जिसको पूजा करते. जो अमेनहोटेप IV जो आया था, उसने क्या किया? अम्यून वाज द चीफ गॉड. He stopped worshipping. इसके worshipping बंद करा दी. Closed the temple, smashed the images. Images, idols एक ही बात है. उनकी जो तस्वीरें थी वो डैमेज कर दी. And he started promoted the worshipping of Aten. Aten की worship कर दी, इसलिए उसने अपने नाम के पीछे खातेन यूज किया. Khaten. Okay, and then after that, when he came, he restored the old ways. Tut,
actually Tutankhaten. He restored the old name and he became Tutankhamun. इसलिए उसने खाटेन टटन खाटेन की जगह क्या बन गया वो टटनखाम्यून. एंड लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, जो अम्यूज का एक मतलब इमेज, लिविंग इमेज. एंड ओवरsaw रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, जो जो भी ओल्ड वेज थे, ओल्ड ट्रेडिशंस, रिस्टोर्ड देम, उन सबको दोबारा लागू कर देना. He reigned for about 9 years, लगभग 9 वर्ष तक उसने शासन किया. And then died unexpectedly because he took over. He became the king in just in a very young age. Just after 9 years, for a brief period of 9 years, he just died unexpectedly. उसकी जो death थी unexpected. Regardless of his fame and the speculation about his fate, उसकी fame, उसकी प्रसिद्धि, and the speculation means whatever the doubts, strangeness about the fate, उसके भाग्य के बारे में जो भी डाउट चल रहे थे. The Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट में उनकी एक बहुत ही मतलब एक मम्मी उनकी भी है, जो बहुत सी मम्मीज का जो डिस्कवरी, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. एंड हाउ मेनी, कितनी होंगी, नो वन नोज, किसी को पता नहीं. मींस दिस इज सागा कंटिन्यू, दैट्स व्हाट सागा मींस, दैट स्टोरी, लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स रादर देन से इट इज कंटिन्यू. ये कंटिन्यू हो रही है अभी भी, स्टिल इट इज गोइंग ऑन. कभी सम टाइम यू कैन हियर इन द न्यूज़ आल्सो, कभी कभी न्यूज़ में भी आती है. स्टिल इन्वेस्टिगेशन लाइक मोनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, that investigation is going on, what type of people they were, and what were their tradition, customs and all, and their way of living, उनका जीने का तरीका क्या था. They wanted the archaeology department, actually that's the main purpose, to find out about the past history of the people, लोगों की history के बारे में पता करें. How many? Egyptian mummy project which began in the inventory in late 2003. 2003 में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, they wanted to discover something from the mummies के कारण, has recorded almost 600 so far. अभी तक उन्होंने 600 का इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं. And still it is counting. Counting means continue. अभी भी counting चल रही है. Next phase of scanning of mummy with the CT scan, portable CT scan donated by the National Geographical Society and Siemens. जो this is the name of that society. Society ने जो donate की थी एक portable CT scan. एक तो CT scan मशीन होती है, portable होती है, which can be carried here and there for the मतलब CT scan tomography and all. And donated by this one, and its manufacturer, the King Tut is one of the first mummies to be scanned. उस portable CT scan machine से the Tut mummy was first, पहली थी जो उसे scan हुई थी. In death as an in life, मतलब death as an in life, moving regardless head of his countrymen, जो और अपने कंट्रीमैन से वो आगे चल रहा था, मतलब मोर एंड मोर इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द टट्स मम्मी. उसकी टट की जो मम्मी थी उसके ऊपर ज्यादा वो इन्वेस्टिगेशन वाज गोइंग ऑन. अ सीटी स्कैन, अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी, उसने उसकी मम्मी को स्कैन किया, फोटोग्राफी एट डिफरेंट एंगल, एक्चुअली दैट इज डिजिटल, वन सॉर्ट ऑफ द डिजिटल फोटोग्राफ्स. एंड हेड टू टो, हेड से टो तक, creating 1700 digital X-ray images. 1700 digital X-ray. Digital X-ray and normal X-ray. In digital X-ray, minute any abnormality is can be observed. वो observe कर सकते हैं. And Tut's head scan about 0.62 millimeter slice. उसकी छोटी-छोटी slices and all. It is made 0.62 millimeter, even not 1 centimeter. Registered the intricate structure. उसकी जो स्ट्रक्चर पार्ट था उसे डिस्क्लोज कर रहे थे फैक्ट. एंड टेक्स वन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और इस तरह से उसकी इमेज को, जो उसकी तस्वीर थी, रिजल्टिंग इमेज, उसकी जो बनी हुई थी तस्वीर, एंड दैट विल गिव ए रियल पिक्चर विद द हेल्प ऑफ with the Tut's entire body and the similarly recorded. और इसी तरह से उसकी entire body का CT scan was carried out and proper record is maintain किया गया. With Tut's entire body and the team of specialists in radiology में, those who are actually about this CT scan and all, they will try to find out and write their report. उनकी report लिखते. Forensics, that is medical, which can be proved as a legal. Forensic and anatomy begin to probe investigation into the secret that winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. जो वहां पर बरियल ग्राउंड के गेट पर जो उसका लगा हुआ था, उनका किंग टट्स का
winged goddesses, जो goddess लगाई गई थी, that this is the protection of the protection for those who are cremated here, उन जो यहाँ पर जिनकी अंत्येष्टि हुई है उनके लिए प्रोटेक्ट करती है. And the night of the scan, workman carried Tut from tomb in his box. The night of the scan, जो नाइट ऑफ द स्कैन, जो स्कैन का नाइट, वो नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट, मतलब उसको स्कैनिंग करने के लिए दे कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में लेकर गए, लाइक ए पॉल बियरर दो जो आर कैरिंग दिस कफिन एंड ऑल, जो कफिन को, डेड बॉडी को लेके जाते हैं, पॉल बियरर. एंड दे क्लाइम्ड ए रैंप, एक रैंप पर चढ़े उसको लेकर, एंड ए फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, स्विरलिंग सैंड, just sand, it because of the wind and it was moving like this in the swirling sand, just in forming the circle. And the rolls in a hydraulic lift, that trailer, actually that stairs and all, it was used just like a this electric stairs, the electric stairs in the trailer, and that held in the scanner, जो स्कैनर में था ट्रेलर, मतलब उसको आगे पीछे करने वाला मशीन. 20 minutes later, two men emerged, and after 20 minutes, two men emerged. They come out, and the sprinted from an office nearby, sprinted, jumping करते हुए from an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans, और दो पेयर प्लास्टिक फैंस के लेके आए. And the $1 million scant had quite because of the sand in a cooler. It means that stopped working. जो CT scan that stopped working because the dust or the sand, it has gone inside. And course of the pharaoh joked a guard nervously. A guard nervously means he was full of fear. उसको डर सा लगा था. And he just joked, उसने मजाक किया था. It is because of the spirit or soul of Tut. बोलता ये सब उसकी आत्मा के कारण हुआ. Okay. How many students have come? Finally, 19, 17. Okay. Eventually, the substitute fan worked well, or the substitute additional fan that worked well enough to finish the procedure. Means that investigation procedure, it was carried out with the help of additional fan, दूसरे fan के साथ. After checking that no data had been lost, और ये check करने के बाद that no data has been lost. Yes, was 18 was gone. Okay. After checking, no data had been lost. कि कोई भी data, nothing is missing from the, means everything is recorded properly. And the technician turned Tut over to the workman. तो उसने Tut को workman को hand over कर दिया. Who carried him back to his tomb. जो वापस उसको उसकी tomb में ले गए. Tomb means that place where he was put to rest, जहाँ पर उसको बैठाया गया, रखा गया. Who carried them? Tom. Less than 3 hours after he was removed from the coffin, or it was less than 3 hours, 3 घंटे से भी कम समय लगा था when he was removed from the coffin. Coffin से जब उसको निकाला था, मतलब it took less than 3 hours for the investigation. And the pharaoh again rested in peace, और pharaoh फिर peace में, शांति से, rested in peace में, again he was put there, दोबारा उसको वहीं पर लगा दिया. And the funerary priest had laid him so long ago, जहाँ पर उन्हें funerary priest and all religious people normally under their observation this cremation is being carried out. जो cremation होता है that is being done under the supervision of some religious person, कोई भी धार्मिक व्यक्ति या साधु, उनके हिसाब से वो. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. Computer screen पर एक बहुत ही startling fact was observed. एक बहुत ही मतलब अजीब तरह आश्चर्यचकित करने वाले जो fact की सच्चाई थी सामने आई. A grey head took shape from a scattering pixel, and the technician spun and tilted in every direction. Means the head, it was tilted with the help of computer in every direction to find out even the smallest image of the party head. उसकी छोटी छोटी भी image थी head की लेने के लिए. And neck vertebrae appeared as clearly as in any anatomy class. किसी भी anatomy में जो creature उनकी किसी भी vertebrae appeared, उनकी जो हड्डी थी main जो इसकी थी, it appeared as बिल्कुल सही थी. And the other images revealed a hand
revealed a hand, several views of the rib cage, और उसके हाथ दूसरी इमेज में उसके hands थे, and revealed hand, several views of the rib cage मछलियों वाला जो portion था, that it took, and the transection of the skulls के transection, different parts of the skulls, means the smallest in part wise the CT scan was carried out, but for now the pressure was off, अब सारा pressure जा चुका था, and the sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled. Jahi Hawass, he smiled, muskraya, visibly, and relieved that nothing had gone seriously wrong, because he was quite comfortable now, because it was a very important investigation, and if anything goes wrong, certainly he was to be blamed. अगर कोई भी चीज गलत होती है तो उसको ब्लेम करना था. So when everything was carried out perfectly, without any problem and all, without any obstruction, means he was quite comfortable. वो काफी comfortable, and he smiled, and I did not sleep last night for a second. उसने कहा पूरी सेकंड में पिछली रात सोया नहीं. He said, I was so worried, क्योंकि मुझे इतनी चिंता थी, but now I think I will go and sleep. और उसने कहा I'll go and sleep. By the time we left the trailer, जब तक हमने ट्रेलर वहां से हम ट्रेलर पर से गए, ट्रेलर मीन दैट मशीन which is used to carry move this CT scan machine, descending metal stairs to the sandy ground में descending metal stair, जो metal की stairs बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, and the wind had stopped. जब हम नीचे गए तो हवा रुक चुकी थी. The winter airy lay cool, जो ठंडी हवा थी काफी, मतलब हवा विंटर एयर, विंटर की जो हवा थी काफी ठंडी थी, एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे डेथ की होती है, मींस देयर इज नो हीट, देयर इज नो एनर्जी इन दैट. एंड इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और इस वैली में, वैली ऑफ द डिपार्टेड, दो दे आर डिपार्टेड फ्रॉम द दिस वर्ल्ड, एंड जस्ट अबाउट द एंट्रेंस, और इसके एंट्रेंस पे तट टॉम स्टूड ओरियन, तट के टॉम पर स्टूड ओरियन, ओरियन मींस वन king who is the controller, who is watching the constellation that ancient Egyptian knew as the soul of Orisis. Orisis, it is one sort of god who is looking after the people after the death. Death के बाद, it means the controlling the souls, and the god of the afterlife. It means he was the god who was the chief god afterlife. Watching over the writing means it was such a position that he was watching over him. वो उसके ऊपर watch कर रहा था, watching over the white. Yes. Okay, students, this chapter is over. Now, once again, if you understood this chapter, it is not a story and all. It is one sort of discovery. Okay, discovering Tut saga continue. It is a real story and it is still going on. But if you are not understood, you can tell anything. If you want to ask, you can ask. Yes, anyone? First, Upinder, non-medical. Yes, you can raise your hand. Upinder Rana. Upinder Rana, non-medical. Raise your hand. Okay, switch on your camera. Let's see.